Okay, Ji. So today our topic is group technology and cellular manufacturing. Previously, in our last 2 or 3 lectures, we have been discussing different types of production methods. The types of layout used for those production methods were also hinted out. उसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत बात किया, जैसे like, for example, flow production can be carried out on a line type of layout or product-based layout. Similarly, like a batch production can be carried out in a functional-based layout. And then in that topic, we also talked about the cellular manufacturing or the group layout. Group layout pe, if you remember, we didn't talk too much, and at that time I mentioned that we will be discussing this aspect much more in detail. So we just compared the effectiveness of group layout with other types of production methods, but we didn't go in too much in detail. So today we will be like talking about this in much more detail. How would be the sequence of this particular presentation? So let me select the pointer first. We will start with the introduction to group technology. A broader view of the group technology would be given to you, and then that would be followed by implementing the group technology. What are the requirements and how can we implement group technology in different situations? Then to signify the importance of group technology, we would be discussing the classical layouts in a brief description. Like briefly we will be describing or discussing the different types of layouts, and that would include the line layout, the functional layout, and then we would compare them with the group layouts. Finally, we would differentiate between the functional and the group layout, because in our discussion in these two terms, we would come to the level that these two types of layouts are sort of like competing with each other, or most of the companies from functional based layout would tend to move towards group layout. So why would they do that? So what are the differences and what are the advantages of shifting over to group layout? Then once the importance is ascertained, established, then we would discuss about the different types of part families, and how can we like identify the part families, because when we go towards group layout or cellular manufacturing, one important aspect is the identification of part families and the corresponding machine groups. So how can we identify those part families? कैसे हम उनको form करते हैं, कैसे identify करते हैं? So what are the different methods of forming part families? That is an important aspect of cellular manufacturing, and we would be discussing about it. Then the different approaches that helps us in implementing cellular manufacturing or identifying part families and corresponding machine groups. So there is a long list of different approaches, but just because the scope of this particular topic in your course is just introductory level, so I would be just discussing a couple of techniques from literature which are simple enough to understand, and obviously they also signify the importance of cellular manufacturing. So the first one would be rank order clustering, and the next one is the cluster identification algorithm. Then how to judge the performance of an algorithm? Normally researchers जो है वो मुख्तलिफ से मुख्तलिफ algorithms जो है तो develop करते हैं, लेकिन which algorithm is better, which is performing better in comparison to others, how can we judge that? तो उसके लिए कोई performance factor होना चाहिए. So what is that performance factor? So we will be discussing one performance factor for sure in this presentation, on the basis of which we can compare like different approaches. And then finally, we would discuss some of the benefits which are normally associated with group technology or cellular manufacturing. So that would sort of conclude our
discussion as far as group technology or cellular manufacturing is concerned. Group technology, as far as its introduction is concerned, group technology is a theory of management based on the principles that similar things should be done similarly. Now, what does it mean? It means that normally we can have different problems, but if we closely observe those problems, some portions, some parts of those problems, they are like similar to each other. Even in case of different problems, some parts of the problems can be similar to each other. So why not? If there are similar parts of each problem, so why not handle those similar parts separately together in a combined manner? So if we can do that, we can solve different problems simultaneously, concurrently. So basically, that is the basic philosophy of group technology: to look for the similarities, bring those similarities together, and then devise a solution for those similar problems, devise a single solution for those similar problems. So that sort of speeds up the techniques which actually solves those problems. So philosophy यही है कि जो चीज़ों के अंदर similarities हैं, या जो प्रॉब्लम्स के अंदर सिमिलैरिटीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं, सिमिलैरिटीज को ग्रुप करें, उनको एक साथ लेके आए एंड फाइंड अ सिंगल सॉल्यूशन फॉर दो सिमिलर प्रॉब्लम्स. बेसिक फिलॉसफी ये है. GT is the realization that many problems are similar, and that by grouping similar problems, a single solution can be found to set of problems, thus saving time and effort. It is again the same aspect discussed in a different manner. वही बात जो मैंने कही कि for different problems, उसके problems all together भी similar हो सकते हैं, problems के parts भी similar हो सकते हैं, लेकिन whatever the similarities are, उनको आप group करें and find a single solution. GT is a manufacturing philosophy in which similar parts are identified and grouped together to take advantage of their similarities in design and production. If looking at the concept of group technology in the context of manufacturing, अगर उसमें हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, हम एक वक्त में काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर बन रही है. अब जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं, उन प्रोडक्ट्स के कुछ पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो एक दूसरे के साथ सिमिलर हो, जिनके सिमिलर डिजाइन्स हो सकते हैं, जिनकी सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. तो क्यों ना हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के उन पार्ट्स को एक साथ एक ही रूम के अंदर, एक ही सेक्शन के अंदर उनके लिए वो मशीन्स और वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें कि जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड हो. तो वो पार्ट्स हम क्विकली विद इन अ सिंगल सेक्शन वी कैन जस्ट मैन्युफैक्चर देम. दैट वुड सेव अस a lot of time, effort, and at the same time a lot of cost as well. So the basic idea of group technology is to identify similarities, bring them together, and find a single solution for that. That's what the main idea of group technology is. Okay ji, how to implement GT? Where to implement GT? The first things, using traditional batch production and process type layout. There are advantages. आगे चल के हम आपको बताएंगे कि नॉर्मली जो ट्रेडिशनल बैच प्रोडक्शन है और जो प्रोसेस बेस्ड लेआउट के अंदर है, प्रोसेस लेआउट जो होता है जिसके अंदर हम नॉर्मली बैच प्रोडक्शन को ही हैंडल कर रहे होते हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं. नॉर्मली वेटिंग टाइम्स बहुत ज्यादा हैं. कुछ अगर आप इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रोडक्शन मेथड्स, वी डिस्कस्ड अ नंबर ऑफ थिंग्स कि जी जो ट्रैवल डिस्टेंस होता है पार्ट्स का वो बहुत ज्यादा होता है. बिकॉज ऑफ दैट द वेटिंग टाइम्स, द लीड टाइम्स आर वेरी हायर. तो उन चीजों को हैंडल कैसे किया जा सकता है कि आप बैच प्रोडक्शन से यू कैन शिफ्ट. अगर आप इफ यू आर ऑपरेटिंग इन बैच प्रोडक्शन, इफ यू आर यूजिंग अ प्रोसेस बेस्ड लेआउट, सो व्हाई नॉट शिफ्ट टू cellular layout or group layout. So that is one area where group technology can be implemented.
if parts can be grouped into part families. Another area where this group technology concept can be very effectively used in any environment where this possibility occurs, where part families can be easily grouped, can be easily identified. So if part families are identifiable, then we can straight away go for group technology, because there are a number of advantages associated with that. And towards the end of this presentation, we would be talking about those advantages. How to implement GT? The first step is to identify the part families. Part families, when we say family, so family of parts means those parts which possess certain similarities. And when on the basis of those similarities, when the parts are grouped together, so that group is actually called part family. So if the first thing is to identify part families in a given set of say 100 parts or 200 parts or 1000 parts, if they are given to us, which are those parts which can be separately grouped and how many number of groups can be formed. If that is possible, then GT can be implemented. And for implementation of GT, this aspect is the first step. Rearrange the production machines into corresponding cells. Now, to process these part families, you require separate sections, separate regions of the manufacturing facility जिसके अंदर इनकी प्रोसेसिंग हो सके. तो उस रीजन या उस सेल या उस सेक्शन के अंदर प्रोडक्शन मशीन्स को उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से अरेंज करने की जरूरत है. सो सेकंड स्टेप जो है, रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्शन मशीन्स इनटू करस्पॉन्डिंग. जो वर्ड करस्पॉन्डिंग हम यूज करें तो इसका मकसद ये है, फॉर ईच पार्ट फैमिली अ मैन्युफैक्चरिंग सेल जिसके अंदर रिक्वायर्ड मशीन्स अवेलेबल हो. दिस इज एक्चुअली the two-step procedure. First, we identify the families and then we adjust machines into groups so that the manufacturing requirement of different part families can be fulfilled. Next, now before going on to cellular manufacturing or the actual the techniques, the implementation and everything, पहले हम इसको कंपेयर करेंगे with the traditional layouts like the line layout and the functional layout. Generally, अगर हम देखें तो in most of today's factories, it is possible to divide the components to be produced into families and all machines into groups, so that all parts in each family can be completely processed in one. आजकल की जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो एक वक्त में एक ही मैन्युफैक्चरर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा होता है और प्रोडक्ट्स के अंदर भी स्लाइट सिमिलैरिटीज होती हैं, या प्रोडक्ट्स के क्या कहते हैं कि उनके जो सब पार्ट्स होते हैं, सब कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर सिमिलैरिटीज होती हैं. सो फैमिलीज ऑफ पार्ट्स या सब कंपोनेंट्स या सब असेंबलीज जो है वो फैमिलीज बनाई जा सकती हैं उसमें से. सो जहां पे फैमिलीज आइडेंटिफाई की जा सकें of parts, so obviously group technology को implement किया जा सकता है. तो generally तो it is implemented everywhere, लेकिन जो just to compare it with the traditional layouts, let's see how it ventures against the line layout and the functional layout. So let's discuss it on the subsequent slides. Line production layout. From our topic of production methods, if you remember, we discussed this aspect. It involves the arrangement of machines in one line depending on the sequence of operations. In product layout, if there is more than one line of production, there are as many lines of machines. Line layout is used at present in simple process industries, in continuous assembly, and for mass production of components required in very large quantities. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइन लेआउट को जब हम डिस्कस किया तो हमने कहा था प्रोडक्ट बेस्ड लेआउट, कि एक लाइन के अंदर एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. अब यहाँ पे आपको ये कुछ मशीन्स, ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं. these blocks represent machines. अब हर लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है. इफ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर डिस्कशन ऑफ फ्लो लाइन मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें हमने कहा था कि वी नॉर्मली यूज स्पेशलाइज्ड मशीन्स ऑन ईच लाइन.
और स्पेशलाइज्ड मशीन यूज करने का मकसद क्या था? मकसद ये था सो दैट इन द क्विकेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम हम जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन आउटपुट लें. And this kind of layout, yeah, this kind of arrangement and the use of specialized equipments actually results in mass production. और उस किस्म की प्रोडक्ट्स के लिए इट इज जनरली रिक्वायर्ड जहां पे एक स्टेबल डिमांड है मार्केट में और एक बड़ा सारा मार्केट शेयर है कंपनी का. तो वी रिक्वायर दिस काइंड ऑफ. लेकिन इसकी डाउनसाइड क्या थी? डाउनसाइड ये थी कि whenever there was a change required in the product design, अगर कस्टमर को थोड़ा सा भी प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर चेंज चाहिए तो it was difficult to incorporate on the inside. What was the reason? Because हम specialized equipment use कर रहे हैं. स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एक ही किस्म का काम कर सकता है, लेकिन उसके फंक्शन को जब आप चेंज करते हैं तो यू मे इन सर्टेन केसेस रिक्वायर टू even replace the entire equipment, even replace the entire resource. And replacing the entire resource of that specialized nature would definitely ask for a huge amount of capital investments. तो capital investments बहुत ज़्यादा हैं. That makes it expensive. So इसके अंदर flexibility of production नहीं है because of using specialized and fast-paced machine. तो एक चीज जो इसके अंदर लैक करती है, it can produce at a very higher rate. ये इसका प्लस पॉइंट है. लेकिन इसका नेगेटिव क्या है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स प्रोडक्ट्स किसी एक लाइन पे नहीं बना सकते, इसीलिए आपको फिर सेपरेट लाइंस डेवलप करनी पड़ती हैं. तो एक ये एस्पेक्ट था, हम इसको पहले डिस्कस भी कर चुके थे. लेट्स गो टुवर्ड्स फंक्शनल लेआउट. फंक्शनल लेआउट में नॉर्मली व्हाट डू वी डू? फॉर एग्जांपल ये लेथ मशीन्स का सेक्शन है, सो वी हैव ऑल लेथ्स इन वन सेक्शन. सिमिलरली this is for like milling machines, so all millings in one section, then all grinding machines in one section, so all drilling machines in one section. Suppose we have one part or product and that requires processing on each and every machine. So what would happen? That part would be introduced into lathe machine, then it may require drilling, then from there it may require like milling, and then finally grinding, and then it would go out into delivery from where a dispatch section from where it would be delivered to the customer. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पार्ट जो है ये एंट्री से लेके एग्जिट तक it visits each individual section of the manufacturing facility. अब उससे होता ये कि ये हर जगह विजिट कर रहा होता है. अब जब हर जगह विजिट करता है तो somebody will have to carry it from here to the next section, then from there to the next section, then from there to the next section, and then to the exit. अब इससे क्या होता है? इससे जितना नॉर्मली इन मैन्युफैक्चरिंग या इन manufacturing industries, manufacturing facilities, there is a term: the more you handle the equipment, the material, the more cost you are adding to it. आप उसको जितना आप उसको हैंडल करेंगे, जितना आप उसको कैरी करेंगे, उतनी कॉस्ट उसके ऊपर, क्योंकि जो कैरी करेगा कौन करेगा? वर्कर करेगा, मशीन करेगा, एंड दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू. सो उससे कॉस्ट बढ़ती है. अब उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए फिर आप क्या करते हैं कि एक एक पार्ट को मूव करने की बजाय आप क्या कहते हैं? आप बैच बनाते हैं. एक ग्रुप 100 पार्ट्स यहाँ पे प्रोसेस हुए, देन ऑल 100 आर मूव टू ड्रिलिंग, देन वंस ऑल द 100 आर done with their processing on drilling machine, then all the hundreds are moved to milling. Then after processing is completed here, then all the hundreds are moved to grinding, and afterwards all the hundreds are moved outside the facility. अब इसमें क्या होता है? इसमें वेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है. जब पार्ट 1 जो प्रोसेस होता है वो दूसरे 99 पार्ट्स के लिए यहाँ भी वेट कर रहा है, यहाँ भी वेट कर रहा है, यहाँ भी वेट कर रहा है, यहाँ भी. So that increases the waiting time. जब वो waiting time increase होता है तो उसके साथ फिर क्या होता है कि आपका जो completion time है, entry to completion time, वो बढ़ जाता है. Processing time on the inside बढ़ जाता है. अब जब processing time on the inside बढ़ता है तो फिर आप longer lead times promise करते हैं. अगर एक काम अगर आप एक पीस को ट्रेवल करवाएं, हो सकता है कि आप विद इन 3 days जो है तो वो काम कंप्लीट कर ले.
लेकिन जब आप पूरे लॉट को मूव करते हैं तो हो सकता है कि वो 10 दिन या 15 दिन ले। सो आपका लीड टाइम जो है वो इंक्रीज करता है, और लीड टाइम इंक्रीज करने से जो जो ऑर्डर टू डिलीवरी टाइम है, कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता है और जब आप उसको डिलीवर करते हैं तो इन बिटवीन जो टाइम एलैप्स होता है वो बढ़ जाता है, वो ज्यादा हो जाए, विच वी नॉर्मली कॉल लीड टाइम। तो यू आर स्लो इन रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर्स। सो ये एक एस्पेक्ट फंक्शनल लेआउट का है। लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है, बिकॉज यू आर यूजिंग जनरल पर्पज मशीन, सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व। आप मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर्स ले सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स, अनलाइक द लाइन layout or the specialized equipments. These are general purpose equipment, so they may be slow in manufacturing, but they are flexible enough, they can produce a range of products, so आपकी flexibility intact रहती है। अब इन दो लेआउट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ग्रुप लेआउट को देखते हैं, अब ये दोनों जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की, अगर हम उसी पार्ट जिसकी हम बात कर रहे थे प्रीवियसली, उसको फॉर एग्जांपल एक लेथ मशीन चाहिए थी, एक मिलिंग चाहिए थी, ड्रिलिंग चाहिए थी, एक ग्राइंडिंग भी चाहिए थी, शुड हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय जी। तो अगर वो चारों मशीन्स हम एक ही सेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर दें, सो द पार्ट वुड नॉट हैव टू ट्रेवल द एंटायर फैसिलिटी। पहला ही एडवांटेज कि आपका जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। सो जब ट्रेवलिंग डिस्टेंस कम होगा तो मटेरियल हैंडलिंग कम होगी, और मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड जो कॉस्ट है दैट वुड आल्सो बी reduced. So because of the reduction in cost, और एट द सेम टाइम आपको लॉट्स के अंदर या बैच के अंदर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं। बैच के अंदर प्रोड्यूस करने की क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज machines are in close proximity, दूर नहीं है। even the worker working on lathe can handle a part to the worker working on drilling. You don't have to acquire or acquire some different machinery or separate machinery, या कोई अलहदा से कोई वर्कर नहीं चाहिए कि जिसको आप वेजेस पे कर रहे हो और वो यहाँ पे पार्ट्स जो है तो वो शिफ्ट ओवर कर, because the distance is smaller. So smaller distances जब travel होते हैं तो आपका फिर because the distances are smaller, आप एक ही पार्ट को मूव करें, आप इसको बैचेस में नहीं प्रोड्यूस करें, तो वो वेटिंग टाइम भी निकल जाता है। तो जब वेटिंग टाइम निकल गया, डिस्टेंसेस कम है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी कम हो गई, तो एक तो the first advantage is that you are reducing the manufacturing cost. The second advantage is that the lead time is reduced, because you are producing the parts like the way in which the parts are produced. It is the way they are processed inside the cell, that is one piece flow. एक प्रोडक्ट मूव करती है rather than कि एक कंप्लीट बैच मैन्युफैक्चर किया जाए एक मशीन पे और फिर उसको दूसरी पे मूव किया जाए, बिकॉज द मशीन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। So that reduces the travel distance, the material handling cost, and these are mainly the advantages कि आप customers को quickly respond करते हैं और आपकी products की cost जो है वो comparatively कम होती है। जहां तक बात फ्लेक्सिबिलिटी की है, बिकॉज अगेन यू आर यूजिंग जनरल पर्पस मशीन्स इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट एज वेल, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन रहती। अब यहाँ पे हम ये तो नहीं प्रॉमिस कर सकते कि दिस सिस्टम वुड बी गिविंग अस अ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एट द रेट ऑफ लाइक अ फ्लो लाइन की तरह का मैन्युफैक्चरिंग रेट नहीं दे सकता। इट कैन नॉट मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, बट वन थिंग इट कैन अश्योर बट लेकिन फ्लो लाइन के अंदर जो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे आपके पास कंपैरेटिवली लेसर पेस पे कंपैरेटिवली हायर फ्लेक्सिबिलिटी इन कंपैरिजन टू फ्लो लाइन दी जा सकती है। इन कंपैरिजन टू बैच टाइप अगर हम देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी तकरीबन इक्विवेलेंट है, स्लाइटली शायद लेसर हो बिकॉज ऑफ द लेसर रेंज ऑफ मशीन्स अवेलेबल इन एसएल, और लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इन कंपैरिजन टू प्रोसेस बेस्ड लेआउट जो है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बैच टाइप प्रोडक्शन नहीं होती बल्कि वन पीस फ्लो होता है, and because of that the rate of production is high. So one aspect that sort of clarifies ये जो लास्ट 2 से 3 स्लाइड्स के अंदर हमने डिस्कस किया
कि जो सेलुलर लेआउट्स हैं या ग्रुप लेआउट्स हैं, दे आर गुड इन फ्लेक्सिबिलिटी, दे आर गुड इन मेंटेनिंग a higher production rate as compared to a batch type production जो कि process based layout के साथ हो, and they are good in maintaining a higher level flexibility जो कि flow line के अंदर नहीं है, and at the same time their lead times are shorter, or because of higher production rate ये in comparison to your batch production ये ज़्यादा market को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कस्टमर को क्विकली भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ओके, सो एक और कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ हमने कर भी लिया। अब आप देखें तो दिस इज फंक्शनल बेस्ड लेआउट, द मशीन्स आर, ये आप देखें तो these are all drilling machines, these are all milling machines, these are all lathe machines, and these are all grinding machines and some other types of machines. And you can see the haphazard nature of parts or batches moving between different, ये जो paths हैं या movements हैं वो दिखाई गई. So it's quite a lot crisscrossing, trespassing between different sections. In comparison to this, अगर आप cellular layout के arrangement को देखें तो आप देखें कि the parts are entering from this side, and each part family is introduced into its own cell. सेल के अंदर वो प्रोसेस होता है और वहीं से वो एग्जिट लाइन के ऊपर लोड होके निकल जाता है। सिमिलरली आप देखें सेकेंड पार्ट फैमिली, it is getting processed inside this cell, and from there it is going out. Similarly, third, fourth, and fifth. So it's by the look of the things, you can see that this is a much more organized system as compared to this one. So this is another way of looking at it, that or comparing it, comparing like group layout with the functional based layout. So that's also proves that group layout is a much better concept as compared to functional based layout. Okay, Ji. Now, once so far we have established the importance of group layout, why should we be shifting over to cellular manufacturing? What are the advantages? What are the benefits? And obviously we will summarize these benefits towards the end of this presentation. The first thing, if you remember, जब हमने बात की थी about implementing group technology at the start introduction में, तो उसमें first step था identifying the part families. So अब अगर हमने decide कर लिया है कि we have to move towards implementing cellular manufacturing, so how do we do that? The first thing is to identify the part families. What are part families? A large manufacturing system can be decomposed into smaller subsystems of part families based on similarities. Again, जितनी number of parts या products produce हो रही हैं in a manufacturing company, उनके products के अंदर, उनके सब components के अंदर, सब assemblies के अंदर कहाँ पे similarities हैं? अब similarities दो किस्म की हो सकती हैं. Either it can be in terms of design or it can be in terms of manufacturing. या तो manufacturing requirements के अंदर similarities हैं या फिर design. जब design for example similar design है, जैसे for example हमारे पास होते हैं rotary parts होते हैं, या आपके पास जो है तो prismatic parts होते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर्ड फॉर्म में पार्ट्स होते हैं, तो वो डिजाइन है, मतलब शेप के लिहाज से सिमिलैरिटीज. सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग, एक ही किस्म की मशीन्स, एक ही साइज की मशीन्स, एक ही किस्म के वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, एक ही किस्म के कटिंग टूल्स की रिक्वायरमेंट्स. तो देयर कैन बी सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, देयर कैन बी सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. समटाइम्स कुछ अप्रोचेस दोनों चीजों को कंसिडर करती हैं. मेनली जो है सारी अप्रोचेस जो है तो वो इनको एड्रेस जरूर करती हैं, लेकिन रिप्रेजेंट डिफरेंट तरीके से करती हैं. आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो हम इन्हीं एट्रीब्यूट्स को कैसे हम डिफरेंट अप्रोचेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पार्ट फैमिलीज दैट वी वुड बी
discussing. Okay, what are the design attributes? अगर हम देखें तो द फर्स्ट थिंग इज लाइक पार्ट कॉन्फ़िगरेशन, वेदर इट इज राउंड और प्रिज्मेटिक, जो मैंने शुरू में ही बताया कि वेदर वो कोई कोई सर्कुलर शेप का है, राउंड शेप का है, जैसे कोई कोई राउंड रॉड है या कोई राउंड डिस्क है, या कोई प्रिज्मेटिक है, कोई स्क्वायर या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का पार्ट है। तो पार्ट की कॉन्फ़िगरेशन, उसका डायमेंशनल एनवलप, अब देखें ये पार्ट कॉन्फ़िगरेशन उसकी शेप के लिहाज से, फिर डायमेंशंस, हो सकता है कि शेप्स सिमिलर हो लेकिन साइजेस में बहुत फर्क हो। तो डायमेंशनल एनवलप, लेंथ टू डायमीटर रेशो एक एस्पेक्ट हो सकता है कि अगर ये सिमिलर हो या किसी एक रेंज के अंदर फॉल कर रहा हो तो हम कह सकते हैं कि दो पार्ट सिमिलर है। लेकिन अगर पार्ट्स दिखने में एक तरह के हैं लेकिन लेंथ टू डायमीटर रेशोज उनकी way apart hai, they are way different from each other, so we cannot place them in one family. So dimensional envelope. Surface integrity, what kind of surface surface clarity is required, kitni behtar surface you want to produce, how clear, how true surface after manufacturing is required. तो कहीं पे यू कैन लाइक वर्क विथ, आपको रफ सरफेस के साथ भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको बहुत ही एब्सोल्युटली क्लीन, क्लियर और एक्यूरेट सरफेस चाहिए टू क्लोज टॉलरेंसेस। तो ऑब्वियसली अगर दो पार्ट्स they look alike, they still fall in the same length to diameter ratio ranges, लेकिन their surface requirements, their machining requirements are different, कि जहां पे आपको बहुत ज्यादा ट्रूनेस चाहिए तो यू मे बी प्रोसेसिंग इट ऑन अ डिफरेंट मशीन के जिसकी टॉलरेंसेस जो है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो बहुत क्लोज हो। लेकिन जहां पे सरफेस रफनेस, आप रफ सरफेस के साथ काम कर सकते हैं, तो शायद आप किसी ऐसी मशीन पे भी उसको प्रोसेस करें कि जिसके अंदर ज्यादा एक्यूरेसी आप मेंटेन ना कर सकें। सो इवन दैट कैन लाइक place them in separate families. So that aspect helps. Then material type, obviously दो different किस्म के materials, even they have the same part configuration, same kind of shape, same envelope, लेकिन if the materials are different, obviously you cannot place them in one family. So that has to be seen as well. Raw material state, कहाँ से आया है उसका रॉ मटेरियल, उस पार्ट का रॉ मटेरियल क्या है, क्या वो कास्टिंग है, क्या वो फोर्ज हुआ है, क्या किसी बार स्टॉक से आया, दैट कैन ऑल्सो, बिकॉज जब जो जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है उसके हिसाब से उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, तो दैट कैन ऑल्सो डिसाइड अबाउट द प्रोसेसिंग of part in the near future. So that can also be one of the reasons whether to put two parts in one family or whether to place them in separate families. So just a second.